hello, good morning, and a big namaste to the entire populace of today's program. I hope everyone is comfortable at his or her place. The charismatic people on the days invited intellectual principals and teachers of the reputed schools from Surajpalsinghji district, our teachers, our employees, and dear students. Dear audience, today morning would really be a different one, which would be presenting us with varied perspectives for our lives. But my first and foremost duty on behalf of Nagesh Karasgi Orchid School and Junior College is to welcome you all for this remarkable session. Thus, I extend my warm welcome to everyone. So I would like to say 3 welcome, welcome, and welcome. We feel honored to have with us the Honorable Maestro Dr. Vikramsinghji Pachlore, who will be mesmerizing all of us with his seminar. Sir, we are blessed and hallowed to have you here. Then, our President, Kumar Radha Karasgi, one of the versatile icon of Solapur, a distinct visionary, and our Secretary and Director, Professor C.B. Nadgowda sir, an eminent personality, a star of vast knowledge and protracted experience, and happy to see both of you here. And we also have many dignified members over here and listen to make you know who we are. This is an educational creed, the Nagesh Karasgi Orchid School, which got established in the year 2012-13, has emerged with an utmost joy and passion to be a part of students' life. We have an all-round developmental ambience with world-class infrastructure, curriculum, extracurriculum, and ultra-modern educational aids. The Nagesh Karasgi Orchid Junior College, which got established in the year 2014-15, is a sigma that facilitates qualitatively to transcend the students in their academics, life skills, co-curricular activities, and futuristic career. Thus, we beckon everyone present here to contribute their possible bit to raise up this institution having a noble cause. Now, it's time to get to know about the majestic personality over here, and to do the further honors, I would like to call upon our Director, Professor C.B. Nadgowda sir, over here. Please come, sir. So once again, very good morning from my side also to all the audience present in this hall. So my job is to put before you who is this personality. And when you go through the details of this person, you will come to know what is his height. His full name, Vikramsinghji Pachlore. He hails from originally Kishangarh of Rajasthan. As you know in history, Shishodiyas, Pachoriyas, they are all the princely states were there, and they belongs to the royal families. So he belongs to the royal family of Pachoriyas. On the basis of this, he has derived his surname as Pachlore in Maharashtra. Basically, as far as his education was concerned, up to 12th he was in Wadia, Pune. Up to 10th he was in Scottish school, Mumbai, and then afterwards
11th and 12th, Wadia, and then afterwards he went abroad. He went abroad for his further studies. He completed his MS in neuroanalysis and cognitive science from University of Texas, USA. Then second degree, certificate of competency from the Writers Bureau, Manchester, United Kingdom. MA in English Literature and Linguistics from Pune University. Master of Behavioural Science from ASB, that is the Asian School of Business, Philippines. Then Bachelor of Mass Communication from Amity University. PhD in Neuro-Linguistic Programming and Behavioral Science, Implementation in Political Organizations especially. Then PG Diploma in Human Rights and International Law, Nanyang University, Israel. Master of Political Science and Philosophy from Jawaharlal Nehru University. Then Master of Sociology and Development Studies, Tel Aviv University, Israel. So these are his academic qualifications, and day by day they are going on increasing. Soon he will be getting some more degrees from the central universities of India. As far as the designations are concerned, they are like this: Founder President of Vande Mataram Education Trust, Research and Development Institute in India. Development Committee Member, Central Universities. For your information, Government of India, HRD Ministry is establishing 16 central universities. Established already. And Honorable Sir is the Development Committee member of all these universities. Many number of times he visits the one university nearby to us, that is Gulbarga Central University. So, and he is also the FFC, Fact Finding Committee member of AIMS Delhi. As far as the honors and awards are concerned in his life, whatever he has got, Azure Tycoon, it's a award from VIT, Vellore Institute of Technology, and Ministry of HRD. From both sides he has got. Then Super Brain Award winner thrice from the Competition Success Review, Delhi. 10 Outstanding Youth of India, TOYI it is called, TOYI, from HRD Ministry. So these are the academic qualifications, the designations and honors, whatever the sir has got. Now apart from that also, he is having a certain image. He is a renowned neuroanalyst, behavioral scientist, clinical psychologist, linguist, corporate and human resource trainer, and his work in the allied fields of psychology, philosophy, dramatics, theatre craft, management and education got widespread appreciation in India and abroad. Bestowed with laureate intelligence, he is also gifted orator, critic, thinker, dramatist and social activist. So looking to the service whatever he has provided till now to the mankind, especially in the field of neurosciences and behavioral science, the government of Italy has awarded him the title as Maestro. Yeah, and also as far as some books are concerned, he is the author of a celebrated book, Success Has No Question, Failure Has No Answer. It is considered to be the epitome of virtue and fountain of enthusiasm. Okay, so like this, the list is endless. It will take a lot of time to put before him all his achievements and whatever the works that he has done for the mankind. So as far as the school is concerned, as far as this organization is concerned, he is guiding, he is with us, he is the main source of enthusiasm since last 2001. So as a person, he is having a lot of positive energy. Those who are coming nearer to him, they will get the positive energy, I can say, and they will become happy. And the best testimony is before all of you, and that is me only. I was very sad some time back, 7-8 years back, and he is a person who liberated me. Not only that,
my two children, they are doing the best, it's because of his nearness. So such is the personality today we are having. So he is going to deliver the seminar on awakening and arising attitude. Attitude itself is a very important thing, very important word which is to be understood by all of us, and in that, particularly he is going to touch the area of awakening attitude, arising attitude. Okay, now we tried our level best as far as this particular institution is concerned. As you know all, our President Kumar Dada Karajgi, even though he is not having education, degrees he is not having, but a lot of knowledge he has gathered. Okay, so with that knowledge, he is always thinking, he is always after the people, those who are having knowledge, and always trying to give more and more, especially to the people of Solapur. He loves Solapur like anything. Always he takes in his speeches the Solapur. Without that he never goes. And he wants to contribute a lot. According to him, once upon a time, Solapur was the second biggest city in Mumbai front, and he wants to bring the same glory of that Manchester of India once again as the education hub of our India. So that's why few years back he generously contributed. He has donated 10 acres of land on which a very beautiful qualitative one engineering college has come up, that is Nagesh Karajgi Orchid College of Engineering and Technology, and it is doing the best. Some professors are here, they will definitely agree to me. And similarly, he felt now he should touch the small children. So we started this school, and within 4 years, this is the fourth year, 3 years only we have completed. First year we were having 132, second 458, and third year we were having 732 children, and this time we are crossing 1100 students. It's all because of what Dada is having the vision about the education and how it is to be taken. And also we are having the guiding persons like Maestro, and because of this it is happening. And our parents, whatever they say, that is a certificate for us. And that certificate is our parents, they say always that we are satisfied. We have seen the transformation in our children. So that is the greatest certificate that we have received till now as far as this school is concerned. And similar is the case with our junior college. Last year we started with the junior college, and not only the academics, but we have tried our level best to shape their career by giving them something extra. So with this brief introduction, I am about to conclude myself, and now I request our Honorable President Kumar Dada Karajgi to felicitate Maestro Vikramsingh Pachlore, sir. Thank you, Dada. And herewith I conclude myself. Thank you very much. Thank you, sir, your endeavor. Now, it's time to taste some peaches and cream. And so, I would like to make a start. Before Maestro, My Majesty, with your kind permission, I would like to start for your topic. Shall I? Yes. Yeah. So, the topic is awakening and arising attitude. I guess we have a good example for the same. We know the world famous Albert Einstein, who has defined theory of relativity, that is E is equal to mc square. You all know about that? But the same person has another phase which defines theory of relativity as such. If we sit with our loved ones, we feel it is 2 minutes even though spending 2 hours with them. But
if we are to sit for 2 minutes on a burning stove, we feel it is 2 hours. And so, I mean to say, awakening and a rising attitude is not to use your valor just to bring about revolution, but it is to use your valor to bring about evolution. Now, I would like to call upon our benevolent Maestro, Sri Vikramsinghji Pachlore, to render further. Your Highness, sir. With your kind permission, may I? Very good morning to all of you, all the dignitaries and the charming people sitting here. Now the morning is good. That's good. Why it's coming from this side only, not from that side? You can look at this side for a while and then your morning will be good. I hope this way you can exercise that. Anyway, no worries. All people, my LLBs at last, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Can you see my charming face? Yes, sir. Some of the students who are backward, they're saying like that charming face. They want to say that we can see your face, but it's not charming or what like that. So, can you see my charming face also? Yes, sir. Before I start, I like to have a few cues. Before I was coming here, I was not feeling well. I was not feeling well. I'm using the past tense intentionally because after looking at your warmth and feeling really, I'm really feeling very well. In pink of my health, outburst with joy and enthusiasm, and all the great panegyrics from the Majesty. I think His Highness need to be very, very high now. So provided in that regard, the hierarchy goes. In an era of a democratic country, people don't accept the monarchy to follow. But anyway, working in that regard. Secondly, when I entered the cabin morning, I hope we all agree from last 3 days it's a very scorching and biting heat. Traveling all the way. And it's a very hot environment like that. I can feel that among the hot people also. And so let's make it a cool environment. People feeling it in that way. And at the moment I entered the cabin of Dada, I was already sweating. So all the dignitaries felt, my God, already he has taken a shower with the sweat. Yeah. So it was all inside fever, nothing to worry bothered about in that regard, we'll take in that. Before I start my session, I know it's economy of time, we are all extended. I hope you all have taken your snacks and high tea already enjoyed. So I think you can calibrate up in that way. Before I start my sessions, I like to make again few requests which I make all the time. First of all, no one will sit with single pillow. No one will sit with double pillow. And some people can sleep without pillow also. Some people are so expert and don't try to impress me by making serious faces. Some people are really, they are like a confession of a born spectator. They make serious faces by looking at us and and at the moment you ask them, so please, okay. Don't try to create impression. In an attempt to create impression, people suffer from depression. So rather than impression and depression, let's go for expression only. I hope I'm loud and clear. Is that fine? Yes, that's going to be very fast in that regard. We find the people are great from the academia, from students over there, charming. And why the students are not smiling? Your practical marks haven't hold out like that. Or something. Well, that's the age in that regard. And I really like all the time I've been getting 10 outstanding youth of India. I know by the time I will pass in 7th generation, I will be called like 10 outstanding youth only. So it's going to be a boost up in that regard. Thank you very much. My last thing is like that. This session is made to have an interaction. The sessions is made to have debate in that regard. So I will not like to put up in that regard more stress and more working. Is it okay? In which language should I speak? Is it this language comfortable or do you want me to speak in that? Because at the time of the... So, before we start, my friends,
which language is comfortable? Is it English or a mix of English, Hindi and Marathi, Manglish, Hinglish, Hindi plus English together? English? Please, let's be open. I think we are already late, so we can, because of my makeup, we got late. So like a train, I will make up now. It is said like that, na? Ladies get late because of makeup, and when trains get late, they make up. Yes or no? So I think we should follow them. Come on, spit up. Okay. Here, please say the side of the Sir, Hindi, English will be okay. Hindi, English. No worry, problem. I can English. I can speak with your friend, German, Spanish, whatever also. अच्छा मराठी में बोले ऐसे ठीक है मराठी ठीक है coming up in that way. The topic is really, when you listen to the word awakening and arising attitude, we just put up to that regard. I'll try to blend as much as I can in that, in English and in Marathi as well. Next, yeah. Yeah, that's it. When we listen to the word awakening, my one more request like that, please don't focus on side. Do you want the sessions to be more technical, point 1, 2, 3, because it's 16 like that? Because sessions I can complete 2 parts by pointing point number 1, point number 2, point number 3, and people are more interested कि क्या आप देव हैं, भगवान हैं? बुद्ध ने कहा मैं भगवान नहीं। बुद्ध से पूछा गया क्या तुम संत हो? उसने कहा मैं संत भी नहीं हूं। बुद्ध से पूछा गया कि क्या तुम अवतार हो? उसने कहा मैं अवतार नहीं हूं। क्या तुम अवलिया हो? नहीं हो। क्या तुम मलंग हो? तो मैं नहीं हूं। फिर बुद्ध से पूछा तुम हो क्या? बुद्ध ने कहा मैं जागृत हूं। आई एम अवेक। आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट सेंट आफ्टर मैसेंजर, आई एम जस्ट अवेक। कितना छोटा सा शब्द है और इस उत्तर के पीछे कितना बड़ा अर्थ है, कितना उसमें गांभीर्य है। इसके गर्भ में जाके देखें, आई एम अवेक, मैं जागृत हूं। Whenever the word awakening comes, we put it in harmony, in a synonym with Buddha. हम पहले एक एक शब्दों का अर्थ ले लेंगे, awakening and arising. I think ये जब 2 शब्द सामने आपके आए होंगे, मैं सेमिनार like that, awakening and arising, so आपको 2 ही फिगर सामने में भी awake and arise. So I think you might have remembered Vivekananda. Swami Vivekananda, awake and arise. और awake हुआ होगा तो बुद्ध आया होगा। जिस तरह से था जय जवान जय किसान, फिर जुड़ा जय विज्ञान। So I added awake, arise and attitude. एक एक शब्दों का अर्थ ले। Are we really awake? And arise and क्या होना होता क्या होता है? क्या हम जगे हुए हैं? आप बोले सर सुबह 6:30 से जगे हुए हैं, यहाँ दौड़ धूप के आके 9:30 से जगे हुए हैं। अगर आपकी कृपा रहेगी तो सोएंगे नहीं। Are we awake? जागृत होना इन्हें होता है कि आप अपने सारी इंद्रियों के साथ जागृत हैं। जागृत होना इन्हें होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। जागा हुआ इन्हें होना होता है कि आप अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों पर नियंत्रण रखें। क्रिया हमारे हाथ में नहीं है, प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। और जिस तरह की प्रतिक्रिया होती है व्यक्ति वैसा ही बनता है। It's not an action that merely decides, the kind of reaction that one gives to that action that decides and differentiates an individual, whether he's going to be this being or that being accordingly. Am I loud and clear? I think how many are listening to me for the first time? Yeah. अच्छा। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं और कितने लोग दोबारा सह रहे हैं? अच्छा, पहली बार सुनने वाले सहने वाले फैक्टर्स ये हैं करके, ठीक है। We'll put it that way. I think the quantity of the new peoples are more up in that line. It's okay. तो आपके ऊपर क्या क्रिया होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है कि छोटी से बड़ी वजह, यहाँ बेतहाशा आज गर्मी हो रही है, जिस कमिंग लाइक स्कॉचिंग हीट इन दैट रिगार्ड। कुछ लोग गर्मियों की भी रिएक्शन ऐसे देते हैं। देखिए हम सभी को एक ही डिग्री के टेम्परेचर फेस है, लेकिन लोगों की जिस तरह की वृत्ति होती है रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग गर्मी के नाम पे आला उन्हाळा, आता उन्हाळा येणारच आहे ना कुठे गर्मी गर्मी पूरा स्नान। कुछ लोग तो ऊपर देख देख के सूरज को इतनी गालियां देते हैं, यानी पूरे सूर्यवंशी होने में भी गाली देते हैं। आर यू गेटिंग इट? और कुछ लोग बाकायदा ऊपर की 4 बटन्स निकाल के
खुद को भी फूकते रहते हैं, दूसरों को भी फूकते रहते हैं. Yes or no? Some people in front of the fan, some people ACs, all. एक ही तरह का टेम्परेचर सभी को है, क्रिया अलग अलग देना है. Yes or no? मैंने पिछले बार भी उदाहरण बताया था कि 4 मित्र एक फंक्शन में, कार्यक्रम में गए और सामने की पंक्ति में, सामने की चेयर पर जाकर बैठ गए. वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने उनको वहां से उठाया, कहा कि चलिए चलिए यहाँ जाइए, चीफ गेस्ट की जगह है, आपको यहाँ नहीं बैठना है. उनको अपमानित महसूस हुआ. पहले मित्र ने सोचा कि आज मेरी इज्जत नहीं है, इसलिए इन लोगों ने मुझे उठाया. एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि ये लोग खुद मुझे इज्जत से बुलाएंगे. उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बहुत बड़ा उद्योगपति बना, आगे जाके बिकेम बैरिस्टर, ही बिकेम अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन, और लोग उसको इज्जत सम्मान से बुलाने लगे. दूसरे मित्र ने सोचा, इन्होंने मुझे उठाया, इनका फंक्शन ही होने देता है, पूरा पंडा नहीं जला देता, पूरा पंडा जला देता. एंड ही बिकेम टेररिस्ट. तीसरे मित्र ने सोचा, यहाँ नहीं, पीछे जाके बैठते, अपना क्या है, यहाँ नहीं, पीछे जाके बैठते, अपना क्या है. वो आदमी जिंदगी भर, तमाम उम्र आम आदमी बना रहा. केजरीवाल नहीं है, नहीं तो आजकल बोलना भी मुश्किल है. आजकल वो आम आदमी बोलना बहुत मुश्किल है भाई. एक सरदार जी अपने बीवी से कहते हैं कि यार मुझे लगता है वो जो पड़ोसन है वो आम आदमी पार्टी की मेंबर है. तो सरदार जी आपको कैसे पता? और मैंने सुबह हेलो कर दिया, उसे झाड़ू दिखा दिया. अच्छा ये समझ में आया इनको. देखिए हमारी युवा पीढ़ी ऐसी है, ये समझ में आ गया उनको, ये समझने में तकलीफ लगती है. यानी बड़ी हमारी युवा पीढ़ी ऐसी है, उनको सरदार और असरदार की बातें जल्दी समझ में आती है. चलो ठीक है. तीसरा जो व्यक्ति था, उसने सोचा कि यहां नहीं, हम पीछे जाके बैठते हैं, फर्क क्या पड़ता है. वो जिंदगी भर आम आदमी बना रहा. इनसाइड द ब्रैकेट आई थिंक आई टोल्ड, केजरीवाल नहीं. और चौथे ने सोचा, आज के बाद किसी भी कार्यक्रम में जाने का नाही. आजपासून कोणत्या कार्यक्रमाला जायचं नाही, कानाला खडा. वो जिंदगी भर निराशावादी बना रहा. एक ही क्रिया 4 लोगों पर हुई है और चारों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी. क्रिया एक ही है पर प्रतिक्रिया अलग है. ये जो प्रतिक्रिया देने की जो क्रिया होती है, ये बहुत जरूरी होती है. जब आप जागरूक होते हैं, अवेक होते हैं और अनालाइज करने लगते हैं और सही एटीट्यूड में आते हैं, तभी आप सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रतिक्रिया देने के लिए आपको सही शिक्षा, सही आचार और सही विचार लगते हैं. एंड दैट इम्बाइब्स अ रियल एटीट्यूड. ये प्रतिक्रिया हमें सही देते आना चाहिए. एंड आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो आवर राइट रिएक्शंस टू गिव. I hope I'm loud and clear that way. You like it to be in this way? Informal is going very well? Yes. I hope it's fine? Very well. Or sometimes so people have the things like that. With the n number of laureates and degrees, my lord, you need to be very serious. Yes or no? People feel like that. And intellectual people should be serious. But let me tell you, those who are the real intellectuals, I hope all our people sitting here, Jinka experience there, Dr. Watson is there, Dada is there, all people. Those who are real intellectual by seed by the heart, those who are into the roots, they'll understand that seriousness is not only crime, it is seen. Because when you are really getting knowledge and wisdom, automatically the bliss and smile comes on your face. एक परमानंद आपको महसूस होता है. Deep rivers move with silent majesty, shallow brooks are noisy. आपको पता है वो घमंडी चेहरे बना के कौन रहते हैं या चुपचाप रहते हैं? कुछ लोग बात ही नहीं करते हैं. आपको पता है कि फंक्शंस में आए तो सीरियस, उनको लगता है कि इंप्रेशन कराए तो हाँ अच्छा. Actually their policy is like that. Better keep your mouth shut and let the people believe that you are a fool rather than opening it and confirming it. So it happens like that. Yes or no? So they have the best policy, they keep their mouth shut and putting like that. So sometimes it becomes really vibrant. So I hope with this go, because I have to address a really mixed audience, from a young cadre over there like that and to a young cadre over there. I've calculated the most youngest person, Dada, over here, very vibrant with the energy. There is a medical law for that, Dada. I will explain that. So Dada is in our drug category in that way. Youth can be factors, how it goes in that.
So when we see the behavior is a function of the both person and the environment. When we talk about the personality or behavior, वो क्या होता है? It depends upon two factors, nature and nurture. Nature is the genetics that what we get in like that. But दो बहन या दो भाई भी समान नहीं होते. अगर आपने कभी देखा होगा सीता गीता समान नहीं होती, राम श्याम समान नहीं होते, जॉन एंड मिल्टन बोथ आर नॉट अलाइक लाइक दैट. Nurture, वो किस वातावरण में पला बड़ा हुआ है, that matters a lot. I think all educationists and we enter the pedagogy and the antagogies and you go through like that national, international when we go, you full up in that way. What kind of nurture, what kind of environment we provide. But sometimes the environment is also common and uniform, but kind of a reaction that we get and how it goes in with that. That's why I always say that don't worry that the child is not listening to you, worry that he is observing you. The parents and the teachers all say, सुनते ही नहीं बच्चे. Are you getting it? सुनते ही नहीं बच्चे. बच्चे सुनते ही नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे हैं किसके? मम्मी लोग पापा को बोलती है ऐकतच नाही काढता, तुमच्यावरच गेलाय. अच्छा, हस्बैंड बोलता है इतने सालों में आपने मेरी नहीं सुनी, वो कहां से सुनने वाला है? It happens that way. Just see the antithesis. Just see the antithesis. एक हम छोटी सी बात फैक्टर्स देखते हैं. I am not going to enter our medical science of phallic stage and anal stage and development and your child psychology of Oedipus complex and these and three. No. Simple. Let's take it very simple. Tagore said, every child comes with the message that God is not yet nervous of man. हर बच्चा ये पैगाम के साथ आता है कि भगवान आज भी इंसान से नाराज नहीं है, निराशा नहीं है. It is an important thing. He comes with that. जब एक बच्चा आता है जीवन में तो भगवान का रूप लेकर आता है, पैगाम लेकर आता है. और ये बच्चे 14, 15, 16 साल में कैसे शैतान हो जाते हैं? ये बोलते खूब बहुत शैतान हो गए, बहुत बदमाश हो गए. तो क्या हमारे पृथ्वी पे शैतान बनने की मशीन है कि हम भगवान को इंसान नहीं बना पा रहे हैं? वो बोलते ऐकतच नहीं. अगर देखा होगा छोटे बच्चों के आप थोड़ा हंसे तो भी फोटोग्राफ्स लेते हैं, रोए तो भी फोटोग्राफ्स लेते हैं. एवरीथिंग वी लव हिम adoringly in everything, day and night up in that regard. And what suddenly happens, you say don't listen like that. The kind of environment that goes imbibed in, that is really very very important. That's why I always say पहले हम वातावरण को और बच्चों को दोष देने के पहले start taking the claim and blame for yourself. The first thing, don't worry that the child is not listening to you, worry that he is observing you. बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, बड़ी बात नहीं है, वो हमको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है. हम बच्चों को बोलते हैं झूठ मत बोलिए, किसी 1 रुपए का उसने चॉकलेट खाया और नहीं बताया तो हमको डांटते हैं. बिल्कुल सच बोलिए, ये सॉर्ट ऑफ. और उसको 2 झापड़ भी दे देते हैं, लपड़ देते हैं. और अचानक अगर फोन आता है और बोलते पापा घर पे नहीं है, यानी उसको 1 रुपए की झूठ के लिए 2 झापड़ पड़ती है और पापा घर पे नहीं है ये बोलने के लिए उसको प्रेरणा दी जाती है. He gets confused कि कथनी और करनी में फर्क है. जब डोर पे बोलने के बाद जब वो देखता है, बोलता है कथनी और करनी में फर्क है, तो उसको लगता है कि लाइफ के लॉ अलग है और बुक्स के लॉ अलग है. तो जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो अलग है और जीवन की नियम अलग है. ऐसा करते करते स्लोली वी डोंट ओपन द ब्रेन ऑफ चाइल्ड, वी करप्ट द ब्रेन ऑफ चाइल्ड. एक्चुअली the purpose of education to create the brain of a child. W.B. says like that, education is not filling of a pail but lighting of a fire. शिक्षा आदमी को इंसान बनाने की प्रक्रिया है. But unfortunately, what happens in the universities and education institutes like that, the universities are the place where diamonds are deemed and pebbles are polished. जहाँ पे हीरो की चमक को कम कर दिया जाता है और पत्थरों को घसा जाता है. That is not like that. It should liberate us. It should make up in that regard to really follow up in that accord. When we do that, automatically things can work and that accordingly. जब हम बच्चों को पहले से चाहेंगे, पहले से उनको आचरण से बताएंगे, अपने आप उनके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि how they need to follow and how they need to go up in that accord. Just yesterday evening I was having a word. Narendra sir told me a very good incident. कि यहाँ पर एक बच्चों की इंटरव्यू शुरू थे, छोटे बच्चों का इंटरव्यू शुरू था. And I think for second, some third standard, some boy came for an interview. I hope if I'm not second. Tanmay Jadhav, second year completed in Jalna. Okay, and third standard. And I think बहुत सारे सवालों में उससे पूछा गया अलग अलग क्वेश्चन, what is your name and everything.
बाद में सर बता रहे, उससे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? तो उस बच्चे ने सोचा, कहते हैं, और उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और फिर सर ने पूछा कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि इधर उधर देख के उसने जवाब दिया कि मेरे पापा बीमार होंगे तो उनको ठीक करने के लिए। सच अ लव, सच अ बॉन्डिंग, सच अ अपब्रिंगिंग। ये जो काइंड ऑफ बॉन्ड, ये अफेक्शन, ये जो संस्कार झलकते हैं, इसी को हम शिक्षा कहते हैं। अभी सर ने कहते कहते कहा कि दादा के पास डिग्रीज नहीं है। डिग्री का अर्थ क्या होता है? आज डिग्री के 5 अर्थ निकल जाएंगे यहाँ पे। 45 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 45 डिग्री ऑफ एंगल, yes or no? Legal degrees, height of degree, the depth of the degree, working like that. There are n number 5 degrees in that regard. A degree means a kind of a level of put up in that regard. अगर ज्ञानेश्वर को फिलोसॉफी और फिलोसॉफी में पीएचडी करना होता तो वो कभी ज्ञानेश्वर नहीं लिखते ही नहीं। 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी लिखकर फैक्टर्स हो गया करके। अगर एक एक वचन पे, चाहे वो नामदेव हो, संत नामदेव हो, तुकाराम हो, उसके ऊपर पीएचडी हो रही है करके, उनको फैक्टर्स नहीं होता। अगर सचिन तेंदुलकर को पोस्ट डॉक या डिलीट क्रिकेट में करना होता तो बल्ला कभी नहीं पकड़ता। शिक्षा का अर्थ यह होता है कि आप जो आदमी जीवन को सीख लेता है, जो समझ लेता है, वो शिक्षित है। जो जागृत है वो शिक्षित है। डिग्रियां, लेवल, सर्टिफिकेट्स होती है, अवार्ड होते हैं बाद में, ठीक है, जाने के बाद लोग अपने आप से लगा लेते हैं फैक्टर्स में, कई फैक्टर्स में। यू माइट हैव सीन, हम लोगों ने पहले डिग्री बनाई, आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन है, देन पीएचडीज है, पीएचडीज के बाद पोस्ट डॉक है, पोस्ट डॉक के बाद डिलीट है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अवेकनिंग, जब आप अंदर की सारी सुप्त शक्तियों को जगा देते हैं, when you focus your energies and automatically rise, the things goes up in that regard and then you rise. And in that case environment का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप इस environment में, इस वातावरण में है, ये बहुत जरूरी पड़ता है। जब आप एक अच्छी शिक्षा की जगह पर होते हैं, अच्छे शिक्षकों के अंदर होते हैं, तभी पता चलता है। अगर आपका गुरु द्रोणाचार्य है तो आप अर्जुन बनेंगे, और आपका गुरु अगर शुक्राचार्य है तो राहु केतु बनेंगे। कई बार आजकल विद्यार्थी बताता है कि सर मैं राहु केतु हूं इसलिए आप शुक्राचार्य। क्योंकि कोई गुरु तो नहीं चाहेगा उसके राहु केतु बने करके, लेकिन द्रोणाचार्य या शुक्राचार्य आजकल विद्यार्थी निर्धारित करते हैं। और विद्यार्थी से पूछा विद्यार्थी का अर्थ क्या है? सर वही जो विद्या की अर्थ निकालता है। और ऐसे जो विद्या की अर्थी निकालते हैं वो बोलते हैं आगे जाके हम ज्ञानपीठ विजेता होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। तो ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ही होने वाले हैं क्योंकि विद्या की अर्थी निकाल रहे हैं। बड़ी विडंबना है। आप जिस वातावरण में हो उसका असर आप पे बहुत पड़ता है। कि कहानी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो हम नए की जाने की बहुत सारे जानिब से नए लोग हैं, उनको भी थोड़ा ओरिएंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पुट अप दैट रिगार्ड। एक दिन क्या हुआ कि मुर्गियों के अंडों के बीच में एक बाज का अंडा, ईगल का अंडा आके गिर गया। अब उन सब मुर्गियों के अंडों के बीच में से सभी मुर्गियों के चूजे निकले और एक बाज का बच्चा निकला। अब वो बचपन से वो मुर्गियों के साथ था, तो वो मुर्गियों की तरह दाना चुगना, वो यूं देखना, और उसकी हालत मुर्गियों से, तो उनके साथ भागना हो जाता। लेकिन वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करता था, लेकिन सोचता मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं। तो बचपन से मुर्गियों के साथ नहीं, उसने दाना चुगना, दाने के साथ ही चलना, उसकी हालत वैसी हो गई थी। एक दिन उस गांव में फकीर आया, उसने देखा कि मुर्गियों के बच्चों के बीच में बाज का बच्चा रहता है। उसने कहा आप तो बाज के बच्चे हो, बाज, ईगल, घार, आपका तो काम है आसमान पे उड़ना, साम्राज्य फैलाना, अपने पंखों से जीत लेना। उसने कहा नहीं मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं। अब वो बचपन से मुर्गियों के साथ था। नहीं आप तो बाज के बच्चे, आपका काम है आसमान पे उड़ना, साम्राज्य फैलाना। वो नहीं, बहुत वाद विवाद होता रहा। उस फकीर ने उस बाज के बच्चे को हाथ पे लिया और दूर ऊंचे पहाड़ी पर चला गया, और ऊंचे पहाड़ी पर जाने के बाद वहां से फेंक दिया। मानो जैसे ही फेंका उसके बेजान पंखों में जान आई, वो अपने आप को बचाने के लिए पंख मारने लगा, और जैसे ही पंख फैला के मारने लगा वो उड़ने लग गया, और वो समझ गया कि वो मुर्गी का बच्चा नहीं, वो बाज का बच्चा है। ऐसे ही समाज की कुपमंडुक वृत्तियों में फंसे हुए
हम मुर्गियों के बीच फंसे हुए बाज हैं। और आप बहुत अच्छा योगा योग है, ये शिक्षा संस्था ऐसी है जहाँ पे फकीर लोग हैं जो आपको बाज बनाने के लिए तैयार है, और बाज तो आप हैं, केवल पहचानने के लिए तैयार है कि आप बाज हैं। एंड ईगल इज हैविंग एटीट्यूड। अगर आप बाज को देखें, एटीट्यूड उससे सीखें। नेपोलियन, आपने देखा होगा कि हिटलर, नेपोलियन अपने आप को ईगल, मोदी टाइगर, लायन क्यों बोलते हैं? ये एटीट्यूड बताना चाहते हैं। बाज क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पंछी क्या करते हैं कि छुप के पेड़ों के बीच में आते हैं, छुप जाते हैं पेड़ों में आके। जैसी बारिश होने वाली है सारे पंछी भागते हैं कि मैं पेड़ों में आके छिप जाऊं, और बाज क्या करता है? बारिश हो रही है, उन बादलों के ऊपर जाकर होता है, जिस बादलों से बारिश आती है उसके ऊपर जाता है। ये उसका एटीट्यूड है, ये दृष्टिकोण है। इसलिए हमें बाज की तरह विजन रखना चाहिए। और दृष्टि और दृष्टिकोण में फर्क है। अभी कुछ दिनों पहले जस्ट आए थे, मैंने दादा से कहा, मंदिर में मुलाकात हुई दादा से, और दादा को कहा कि आपका स्पेक्स चेंज हो गया, दृष्टि बदली है, दृष्टिकोण। तो दादा ने बड़ा आमिर खान की तरह स्माइल करके तो दिन ब दिन दादा यंग होते जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, छोड़। इसका राज बाद में अपन करना है, उस पर भी सेमिनार देना है, ऐसा है। तो ये दृष्टि है, दृष्टिकोण। दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत फर्क होता है। दृष्टि ये होती है कि आप पानी को सिर्फ पानी ही देख रहे हैं। नेगेटिव दृष्टि, जिसे कहते हैं नेगेटिव दृष्टि होती है, आप दूध में पानी देखते हैं। और पॉजिटिव दृष्टि क्या होती है? जो दूध के अंदर दही, घी, पनीर देख ले, उसको दृष्टिकोण कहते हैं। अ साइट एंड विजन। विजनरी वो होता है जो दूध के अंदर पनीर देख लेता है। जिसको दूध के अंदर पनीर दिख जाता है, घी दिख जाता है, देख जाता है कि आगे क्या हो सकता है, वो विजनरी है। हम लोग तो दूध के अंदर ही पानी देखते हैं, क्या है तो सिर्फ पानी ही पानी। आज की शिक्षा का महत्व यह है, एंड अराइजिंग एंड अवेक। जब आप अवेक होते हैं तो आप दृष्टि से दृष्टिकोण की ओर आ जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू फील योरसेल्फ ट्रांसेंडेड, यू फील योरसेल्फ हैप्पी। दैट इज रियली व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयारी बहुत ही सहज रूप से हो सकती है अगर आप अपने आप से ईमानदार रहें तो। प्लीज नेक्स्ट। When we feel like that, there are n number of things, पर मैं चाहता हूं कि 5 चीजों पर हम बेसिकली फोकस करें और चीजें आराम हो सके। यहां पर सभी को समझ में आ रहा है ना? आई होप like that. Surely? Good. With a smile more? Good. The divine core of our personality is covered by 5 dimensions. 5 चीजों को ध्यान रखकर अपने आप में चीजों में हम पाएंगे we can awake and arise to the things of that easy. हम we can get awake also, arise also. स्वामी विवेकानंद जी के रिसर्च में से ये है, उनका सारांश ये है। विवेकानंद जी कहते हैं करके कि ये पूरी जो दुनिया है, पूरा जो जीवन है, ये एक अखाड़ा है, जिम्नेजियम है, और हमारी आत्मा उसके अंदर एक्सरसाइज करते रहती है, व्यायाम करते रहती है। और जितना ज्यादा वो व्यायाम करती है उतना ही वो दैविक शक्तियों के करीब आती है। वी बिकम मोर गॉडली, वी बिकम मोर गॉडली एंड वी बिकम मोर गुडली। गुडली एंड गॉडली, गुगली नहीं, अरे गेटिंग। सो वी बिकम मोर गुडली एंड गॉडली, जैसे से हम करीब आते हैं। और कई बार ये होता है कि हम देव बनने की लालसा में कभी तो दानव की ओर जाते हैं। हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि देव और दानव दोनों हमारे अंदर ही है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके अंदर 2 तरह के भेड़िए रहते हैं, एक भेड़िया है, एक शेर है, एक पाप का है, एक पुण्य का है, और दोनों में हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो फिर भक्त पूछते हैं कि इसमें जीतता कौन है, जीतेगा कौन? एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक पाप है, पुण्य है, तो उसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसको आप चारा ज्यादा खिलाएंगे, जिसका खान पान ज्यादा करेंगे। अगर आप अच्छाई को ज्यादा चारा खिलाते हैं तो वो जीतेगी, बुराई को ज्यादा चारा खिलाते हैं तो वो जीतेगी। अगर आपने अच्छाई करने वाले शेर को ज्यादा चारा दिया, ज्यादा खुराक दी, तो वो जीतेगा, और अगर बुराई करने वाले शेर को ज्यादा दी तो वो जीतेगा। सवाल ये है कि आप किसको कितना खुराक खिला रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
इन 5 चीजों पर अगर हम ध्यान दें अपने आप चीजों को थिंग्स विल बिकम मोर ओके एंड केयर. फिजिकल डायमेंशन कंसिस्टिंग ऑफ आवर बॉडी एंड सेंसेस. अपने शरीर का सबसे पहले हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें. Nowadays with the youth generation, health की ओर ज्यादा फैक्टर्स ध्यान नहीं रहता है करके. It's an era of a smartphone. People becoming dull and both becoming smart like that. फेस टू फेस बात नहीं करते. फेसबुक पे 1000 लाइक है लेकिन सामने किसी को लाइक नहीं करते. Yes or no? बोलते इमीडिएटली कुछ भी पोस्ट हुआ व्हाट्सएप एंड व्हाट्स डाउन. Yes or no? घर में है फुर्सत नहीं व्हाट्सएप पूछने की लेकिन व्हाट्सएप पे सबसे पूछते हैं सुबह से क्या खाया तो किससे नहाया, है ना, वो सब है. लेकिन सामने कोई आए. पहले जमाना ऐसा था लोग बोलते थे कोई आए तो मैं खाना खाऊं. अब बोलते ये जाए तो मैं खाना खाऊं. ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और वी आर वेरी टेक्नो savvy एंड वी फील पीपल से लाइक दैट सर आई हैव नॉट सीन यू सिंस लॉन्ग. हम मिले ही नहीं. अभी तो मिले थे पिछले महीने. नहीं सर फेसबुक पे मिले ही नहीं. आई एम नॉट ऑन फेसबुक. आई लाइक फेस टू फेस. सर वी नीड टू बी सोशल एंड सोशल नेटवर्किंग. ये इतने सोशल हैं कि जब रियली सोशल में 5 लोगों से बात करने लगे तो बोर हो जाते हैं. They can't meet face to face like that, but they like whatever the new dress they wear. There should be thousands like, 1500 like, and they don't like anyone. Face to face they don't like. Really an antithesis thing. Anyway, a technology is good for a boon, but I always use a negative thing with that. Health का सबसे पहले ध्यान रखें. Fast food kills you fast, my friends. Please have a healthy food in that regard. And easy mantras I'll give. Just follow in that regard. अच्छी सेहत का राज है खाने से दुगना पानी, तिगुनी हवा और चौगुनी हंसी. जितना खाना खाते हो उससे दुगना पानी पियो, 3 गुना हवा लीजिए और 4 गुना हंसिए. हम लोग भारतीय है उल्टा करते हैं. 4 गुना खाना खाते हैं. नियम और मापदंड ऐसे हैं कि सुबह का जो खाना है वो राजा की तरह होना चाहिए. राजा की तरह नहीं, इट शुड बी वेरी सॉरी ब्रेकफास्ट जो है न्यारी टिफिन जिसे कहते हैं वो राजा की तरह होना चाहिए. अ वेरी रॉयल नाइस डिशली कर लगता है वो राजा की तरह होना चाहिए. दोपहर का खाना जो है वो किसान की तरह होना चाहिए. किसान खाता है थोड़ी जवारी भाकरी लेके उसके साथ करके बाद में मेहनत करता है. और रात का जो खाना है वो भिखारी की तरह होना चाहिए. इन्हें टुकड़ों में होना चाहिए थोड़ा सा लाइट. लेकिन हम तो भारतीय हैं. हम सब भारतीय हैं. हम सुबह का नाश्ता तो राजा की तरह करते हैं, दोपहर के लंच में महाराजा हो जाते हैं. हमारे टिफिन के साइज देखें तो हमारे ऑफिस फाइल्स ज्यादा रहते हैं. तो और हम भारतीयों का सारा प्यार पेट पे ही है. हमारा सारा प्यार, सारा भार, सारा व्यापार पेट से. अच्छा और उसमें निर्लज्जम सदा सुखी. हमने कहावती बना दी है. सर पापी पेट का सवाल है. पापी पेट है कि पूरी